Hello friends, how are you all? Today we are going to see chapter 1 networking concept for class 8. Let us start. So first of all, what is network? For that we will see some of the examples. कुछ examples हम लोग देखेंगे जैसे network of roads and railway lines which you can see कि आप कैसे connected होते हो. Like Google Map में आप देखते हो location and with that you come to know कि हाँ यहाँ traffic है तो आप दूसरे रोड वे से जाते हो. सो दैट इज ऑल दैट द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क. इवन अबाउट द रेलवेज दे आर गेटिंग कनेक्टेड. आप देखते हो कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये गाड़ी अभी आने वाली है. नाउ यू नो मेनी ऑफ द एप्लीकेशंस आर आल्सो अवेलेबल जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ वेयर इज द मीन्स व्हाट इज द स्टेटस अबाउट द रेलवेज. नेक्स्ट, communication network of telephone systems. Everyone know that now we are getting connected. हम लोग सब लोग टेलीफोन से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं और कभी भी हम लोग किसी को भी कॉल कर सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम. ओके, सो यू कैन टॉक विद देम. यू कैन ऑल्सो नाउ हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद देम. वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी जिसमें आप एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं. लाइक यू नो दैट नाउ ऑनलाइन क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन जिसमें हम गूगल मीट में या फिर बाद में आप जूम ले लो या कोई भी एप्लीकेशन ले लो जिसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं. एंड नाउ व्हाट्सएप ऑल्सो इज देयर. नेक्स्ट आफ्टर दैट नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड एटीएम्स. यू नो दैट बैंक और एटीएम में हम लोग जैसे ही बैंक में जाते हैं नाउ यू हैव टू नॉट टू गो टू अवर ब्रांच. इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप दूसरे ब्रांच पर जाकर भी अपने बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट लेना that you can do. Even you can withdraw the money from anywhere for the ATMs, right? ATM machines बहुत सारी जगह पे हैं. Not even here but in foreign countries also we go to the ATM machine and there we can withdraw the money. But when it is the facility available when we are in network. Okay, so yes. Next is radio television network broadcasting. You have seen that many times live telecast आपको दिखता है लाइक स्पोर्ट्स. अभी तो आप लोग देखते ही हो कि आजकल क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है. मेनी ऑफ द पीपल यूज टू सी दैट थिंग लाइव टेलीकास्ट. एंड रेडियो, यस रेडियो, आरजे, राइट. बहुत सारे आरजेज आपके लिए वर्क करते हैं रेडियो पे. मीन्स दे गिव इंस्पिरेशनल स्टोरीज ओवर देयर एंड विद दैट एवरीवन नो म्यूजिक. वी लाइक इट वेरी मच. नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एज आई हैव टोल्ड यू दैट डिस्टेंट प्लेसेस and I've also told you about the example of online class. Next, network of malls, schools, hospitals. आप देखना कि बहुत सारी स्कूल्स में आजकल लैब्स होती है तो लैब में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए yes we are using the network and even we use it for different buildings, different in the colleges also. Next, hospital में आपको दिखेगा कि they are having different branches now and even in that same hospital अलग अलग जगह पर आप लोग हो तो फिर वो connected रहते हैं with the help of network. Now in the shopping malls I can give the example कि एक बड़ा से mall में आप गए हो and you are doing the shopping and yes you can means go for the bill from anywhere like Big Bazaar. You can take it the example Reliance, DMart and many more. Next, internet is an outcome of cyber networking. अगर आप साइबर नेटवर्किंग करते हैं यू नो दैट पहले ऐसा था कि मैनी ऑफ द पीपल यूज टू टॉक, दे यूज टू डू चैट और ये सब. तो ये साइबर नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है. बिफोर दैट वी वर नॉट हैविंग दिस टाइप ऑफ इंटरफेस ओवर हियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज नेटवर्किंग. अब नेटवर्किंग यानी क्या? तो नेटवर्क पे अब हम लोग आ जाते हैं. नेट एवरीवन नो लाइक अ फिशिंग नेट. तो फिशिंग नेट में जैसे आप फिश को कैसे आप कैप्चर करते हो, वो कैच करते हो, वैसे ही यहाँ है कि हाँ सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. सो यस, अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से साथ जुड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड. इवन देयर पेरिफेरल डिवाइसेस. उसके पेरिफेरल डिवाइसेस यानी क्या कि उसके साथ दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं लाइक यू कैन से प्रिंटर, स्कैनर. Okay, so that can also get it connected and you can share it. Okay, आप share भी कर सकते हो information and also the hardware resources. Take one example कि मेरे पास एक ही प्रिंटर है और मेरे पास यहाँ 3-4 कंप्यूटर्स हैं मेरे ऑफिस में. I have in my office 4-5 computers and with that only one printer. Now I want to take it from any one of the computer
जो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली प्रिंटर के साथ, वो कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई हैव टू गो टू दैट प्लेस एंड आई हैव टू टेक द प्रिंट आउट, और आई हैव टू यूज मीन्स और एक हार्डवेयर डिवाइस लेना पड़ेगा, दैट इज वन मोर प्रिंटर, सो द कॉस्ट इज वेरी मच। ओके, तो उससे अच्छा हमें क्या लगता है दैट वी विल गो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क में क्या होगा, इफ द कंप्यूटर्स आर इन कनेक्शन विद ईच अदर, तो हम लोग उसका प्रिंट आउट कहीं से भी ले सकते हैं, राइट, यू कैन गिव द प्रिंट कमांड एंड इट विल बी टेकन द प्रिंट आउट ऑन दैट वन प्रिंटर ओनली, सो हमारा कॉस्ट बच गया। अनदर थिंग दैट वी कैन डू कि आजकल प्रिंटर्स आते हैं विद द वाईफाई कनेक्शन, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पार्ट कि हाँ वाईफाई से कनेक्ट होता है, सो नेटवर्किंग यस हियर ऑल्सो इट इज वर्किंग। नाउ वाईफाई एवरीवन नो वायरलेस फिडिलिटी, जिसमें आप वायरलेस कनेक्शन से आप जुड़ते हो एंड यू कैन गेट द नेट फैसिलिटी एंड यू कैन डू योर वर्क। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, यस वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट एडवांटेज इज एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। इफ ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर हम लोग यानी एक मेन कंप्यूटर होता है जिसमें सारा स्टोर होता है, सारा बैकअप लिया जाता है, so there is no need to store in our computers. You must have seen in many of the schools the interactive boards are working. तो interactive boards में जो सारा कनेक्शन आता है वो सर्वर के थ्रू आता है, उसके बारे में भी बात करूंगी मैं, सर्वर और इसके बारे में आगे। ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। प्रिजर्व यानी वो हमेशा के लिए वहां स्टोर रहेगा। ओके, सो इट इज नॉट टू रेगुलरली, यू हैव टू नॉट टू मेंटेन द बैकअप, वो एक जगह पे स्टोर रहेगा, दैट इज सेंट्रल लोकेशन। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। आई हैव गिवन द एग्जांपल नाउ ओनली अबाउट द प्रिंटर। एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी आपके कंप्यूटर की बढ़ा देगा, क्योंकि हमें बार बार उसमें अपग्रेड करना और ये सब करना है, तो हम लोग नेटवर्क के थ्रू हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, इवन यू कैन डिलीट सम ऑफ द थिंग्स इफ इट इज इन नेटवर्क। ओके, सो it will work smoothly. Okay, your computers will work smoothly. Redundancy means duplication of data. यहाँ बहुत सारी हार्ड कॉपीज हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इफ सॉफ्ट कॉपीज हमारे स्टोर्ड है at many of the places, then there is no need of hard copy more over there. Next, quickest document deliver. Like you can take the example कि हाँ अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे अगर वो नेटवर्क में वर्क कर रहा है then directly I can get connected with that कंप्यूटर और मैं उसे इंस्टॉल कर सकती हूँ। या तो फिर क्या करना पड़ेगा, वी विल गो विद द पेन ड्राइव में फिर उसे कॉपी करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल गो टू दैट पीसी एंड वी विल पेस्ट इट एंड इंस्टॉल इट। तो इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, तो उस वक्त ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो नेटवर्क कार्ड, राइट, नेटवर्क कार्ड यानी यहाँ देखिए ये एक कार्ड होता है विच यू विल सी लाइक यू नीडेड। आप देखते होंगे लैपटॉप, पीसी या किसी में भी आपको साउंड कार्ड की जरूरत होती है फॉर साउंड, राइट। सो वी नीडेड ओवर योर नेटवर्क कार्ड फॉर द नेटवर्किंग। यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ प्लेस इन योर लैपटॉप और पीसी, आपको दिख रहा होगा, एंड इवन यू मस्ट हैव सीन इन द फोन्स, राइट, टेलीफोन। नेक्स्ट, नेटवर्किंग केबल। केबल के बगैर तो काम हो सकता है अगर वो वायरलेस है, बट यस वी विल सी द नेटवर्क केबल ऑल्सो। सॉरी, योर नेटवर्क केबल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज RJ45। क्यों उसे RJ45 बोलते हैं? बिकॉज इन दैट 8 वायर्स आर कनेक्टेड ओवर देयर और यू कैन सी इट ओवर हियर। तो 8 वायर्स जो स्मॉल आपको दिख रहे हैं, दैट इज द कनेक्शन। ओके, एंड दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू अवर नेटवर्क कार्ड। ओके, तो केबल जो चाहिए वो है RJ45। Next, hubs and switches. Now you can see here this is the hub. Hub में यहाँ बहुत सारे connections आपको दिख रहे होंगे. Somewhere the pen drive is connected, somewhere the PC is connected, somewhere laptop. So you can get connected with a small hub. Okay, जिसमें एक छोटा सा ऑफिस है, तो उसमें आपको अगर वर्क करना है बहुत सारे डिवाइसेस के साथ या फिर बहुत मे बी 4 to 5 कंप्यूटर्स, नॉट मोर देन दैट, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। Another thing, switches you can say कि वो पूरा एक intelligent hub है। Why intelligent hub? Because in that many of the computers, many of the things are connected to each other. Like I told you about the mall. तो mall में आप देख रहे होंगे कि हाँ कैमरास भी होते हैं,
even in institutes you must have seen the cameras, even you have seen that they are working together, bills banana, तो वो अगर network में नहीं होगा तो it's not possible. So for that we needed an intelligent hub, that is switch. Now type of networks according to the geographical area. Geographical area यानी according to the area wise वो कैसे divided है. First of all personal area network. पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स वो एक तरीके से हम लोग प्राइवेट नेटवर्क जो हम यूज करते हैं विच इज इन दैट मच एरिया ओनली, लाइक यू आर कनेक्टिंग वन लैपटॉप टू अनदर. एज आई टोल्ड यू ब्लूटूथ इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. उसमें ब्लूटूथ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओवर ईयर फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी. in that you can get connected with the phone and printer and many of the things. Okay, आजकल आप देखते होंगे कि हाँ ब्लूटूथ हेडफोन्स, speakers and that all are coming. Okay, so you can get connected but in that much small range area. Okay, so personal area network, that is for personal. Okay, and it is for 10 meters or you can say 30 feet. Next, local area network. Local area network, in that you can take the example of office, school, right? It may be a campus. Okay, so वहाँ आप connect कर रहे हो बहुत सारे computers को एक दूसरे के साथ with the help of the server. Yes, you get it, with the help of server. Okay, so this is the server and this all are the clients which are requesting for the information, यानी वो network में connected है एक दूसरे के साथ. Okay, and this is the remote computer over here, and in that the area which is being covered, that is more than the personal area network, वो उससे ज़्यादा है. Next is metropolitan area network. Metropolitan area network, in that it covers the city. आपका पूरा city वहाँ cover हो जाता है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ one example I have kept it, university campus, government buildings. आप buildings एक दूसरे से connected होते हैं. Then office. Okay, like I told you about different branches are there of banks. तो वो banks एक दूसरे से connected कैसे रहेंगे? With the help of this type of network. Okay, and in that you can take the example over here, cable televisions. Okay, and local banks. Wide area network. In wide area network, yes, the whole world is being covered over here. Like you can sit on one place and getting connected with the another city, country. Okay, तो आप यहाँ large area network अगर आपके बारे में बताया जाए तो then सबसे top पे आता है wide area network. And in that the examples come over here, internet and intranet. Internet means what? यहाँ एक चीज है कि internet means here it covers the whole world. It is a public network. While intranet is a private network in which companies अपने employees को जो यानी उतने area में network देते हैं, that is called intranet. Okay. Next, after that we are having network architecture. Network architecture means overall design. उसका design कैसा होगा? तो first of all there are two types. In that first one is client server network, जो मैं बार बार बता रही हूँ कि ये एक server होता है. This is one main remote computer and with that many of the computers are getting connected. That is the client. Okay, अब server क्या करता है? It provides the information on the request by the client. अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि हाँ भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई वांट दिस इन्फॉर्मेशन, देन यस द सर्वर विल प्रोवाइड इट. नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. हियर ऑल द कंप्यूटर्स आर गेटिंग कनेक्टेड विद ईच अदर. आप देखिए यहाँ डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं एंड इन द क्रॉस ऑल्सो यू कैन सी दैट दे आर कनेक्टेड. सो यस, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट ऑल्सो एंड पीयर टू पीयर. हियर इट इज हैविंग इक्वल कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटीज. तो सभी में ऐसा नहीं है कि दिस वन इज अ सेंट्रल कंप्यूटर. यहाँ सारे ही कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके, एंड एवरी वन इज एक्टिंग एज अ सर्वर और अ क्लाइंट. सभी लोग सर्वर और क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव. शेयर ड्राइव यानी अगर आपका फॉर दिस वन एग्जाम्पल आई विल जस्ट कीप इट ओवर हियर. मैं यहाँ सीधे नहीं बता सकती बट आई कैन टेल यू जस्ट एजम्पशन आई एम कीपिंग ओवर हियर कि आप एक जैसे बिल्डिंग में हो या फिर एक रूम में हो जहाँ दो कंप्यूटर्स एक अलग अलग जगह पे है, राइट? सो बट दे आर इन नेटवर्क विथ ईच अदर. तो आप क्या करोगे कि जैसे मुझे ए वाले कंप्यूटर से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आई वांट इट इन द बी.
तो क्या करेंगे? So here are the steps. Double click on the network icon on the desktop or you can go to the start button computer network option. आप जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोल रही हूँ वैसे कर सकते हो इफ यू आर हैविंग द नेटवर्क. ओके, सो अगर नेटवर्क में है आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स तो आप कर सकते हो. सो यू विल सी देयर दैट हाउ मेनी आर देयर इन द नेटवर्क. सो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ शेयर्ड ड्राइव्स. फिर आप उसे व्यू करोगे एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन एनी ऑफ द ड्राइव और उसमें उसका कंटेंट देखोगे. यू विल सिलेक्ट द रिक्वायर्ड शेयर्ड ड्राइव टू सी इट्स कंटेंट, यानी उसका कंटेंट आप देखो. जैसे मुझे ए वाले कंप्यूटर से या लैपटॉप से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ए वाले कंप्यूटर या लैपटॉप पे क्लिक करूंगी एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई विल फाइंड द रिक्वायर्ड फाइल, अब मैं उसमें से जो फाइल मुझे चाहिए वो देखूंगी. आई विल फाइंड इट आउट. इफ यू वांटेड, अगर आपको चाहिए तो वो फाइल को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके एंड देन यू विल कॉपी इट. एवरीवन नो द शॉर्टकट. ओके, सो दैट इज कंट्रोल सी और यू कैन ऑल्सो मेक अ राइट क्लिक एंड देन यू विल पेस्ट इट वेयर. आप वहां जाके पेस्ट करोगे जहां आपको चाहिए आपके ओन कंप्यूटर में. ओके, so that you will copy and you will paste it in your computer. Okay, so this way, yes, it is very nice to have a network the computers, but yes, there is a drawback also of it कि उसमें यानी अगर इंटरनेट चल रहा है and with that the security purpose you want to maintain तो वो नहीं maintain होता है. So you will go to the network security now. Network security means the protecting the data and resources from any unauthorized access. जैसे आप नेटवर्क में रख रहे हो and if you are not given any password or anything, then what will happen कि many of the people can have an access and they can misuse your data. Okay, तो यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. So yes, the network security purpose must be solved over here. So what we have to do? So some of the important things which we have to keep it in mind. Some employees may try to change the data. उसका data पूरा change कर सकते हैं वो लोग, like leave record, salary, then performance appraisal because it is related to them. Okay, then accidental deletion of important data. कितनी बार data वो लोग delete कर देते हैं, maybe because of some reason, maybe वो delete हो भी जाता हो by chance, it may happen. Then former employees or some other people may try to harm the company's data. यानी कंपनी के डेटा वो लेकर उसे मिसयूज भी कर सकते हैं या मे बी दैट इंटेंशनली और मे बी एनी अदर वे. पीपल आउटसाइड द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल डेटा. वाई? बिकॉज जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वैसे ही वो लोग हार्म करना चाहते हैं हमारे मीन्स कंपनी को हार्म करना चाहते हैं या कंपनी के डेटाज लेना चाहते हैं. सो एट दैट टाइम यू हैव टू कीप इट इन माइंड the security purpose of your network. So now two network securities are over here which you can do, that is login security. Okay, login security and write security. Now login security यानी क्या कि यहाँ आपको ही access होगा, not anyone else. Okay, so in that you have to make it login name and password so no one else can access it. Sometimes it may happen कि हाँ आपने किसी से password share कर दिया, then also it may be harmful to us because we are not knowing that who is like wrong person or right person. So yes, we have to give the login security if it is confidential then. Okay, confidential data है तो आपको login security रखना है. Next is the write security. You can take the example that in many of the softwares या many of the applications ऐसा होता है कि हमें privately रखना चाहिए. Private means in that only you can access it, you can only see it. Here half private यानी कुछ चीजें हम लोग दिखा सकते हैं, कुछ नहीं भी. Like companies के सारे डेटा सभी लोगों को नहीं पता होता है, that shareholders are not knowing about it. Okay, but some of the things yes they are knowing. When you are keeping it private means your own confidential way, or you can keep it secure so no one else can access it. You can take the example like in school or school you can take the example कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर्स का एक्सेस अलग होता है, एडमिन डिपार्टमेंट का अलग एक्सेस होता है एंड फॉर द स्टूडेंट कैन नॉट चेंज द डेटा, teachers cannot change the data, the admin can change the data, right? So this is the thing that you have to keep it in mind. Hope you all have understand about this chapter. Please like, share and subscribe and give the comments in the videos. Thank you.